फ़हम कुरान कोर्स और Quranic understanding. So let's start. First of all, some necessary terms we need to go through. Istrahat mean necessary terms. So ilmus sarf, which you can say conjugations. लफ्ज़ी तब्दीली तगय्युरात को इल्मुस सर्फ कहते हैं। लफ्ज़ में कोई भी तब्दीली आ रही है, उसमें कोई भी अदल बदल हो रहा है, तो उसके इल्म को इल्म सर्फ कहते हैं। इसमें कलमा लफ्ज़ के अंदर की तब्दीली के असूल बताए जाते हैं। In other words, it is the knowledge of changing or interchanging within the word and its principles. So let's clarify with an example. Here is an example. Maslan, nasarun मदद करना और टू हेल्प, नासिरुन मदद करने वाला और हेल्पर, नासरुन नसरुन नासिरुन। सो लफ्ज़ के अंदर तब्दीली आ रही है, तो ये इल्म सर्फ के अंदर आ रहा है। एक और मिसाल देखते हैं। नसरा मनसूरुन, उसने मदद की, वो मदद किया गया। और यू कैन से नसरा ही हेल्प्ड, मनसूरुन ही वाज हेल्प्ड। यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं, वो सब मदद करेंगे। दे ऑल हेल्प, दे ऑल विल हेल्प। सो इल्म सर्फ। द नेक्स्ट वन इज इल्म नज्व। अगला ज़रूरी इल्म नज्व, इसे तरतीब कलाम भी कहते हैं, और यू कैन से द सिंटेक्स। इसमें कलमात, अल्फाज और फ़िक्रा कलाम को तरतीब से जोड़ने के क़वाइद बताए जाते हैं। पहले में लफ्ज़ में तब्दीली आ रही थी, इसमें जुमले में या फ़िक्रे में। ठीक है। It is the knowledge of principles on gathering words and sentences and arranging them. How to arrange noun, verb and object to form a sentence. इसम, हर्फ और फ़ेल को जोड़कर जुमला बनाने की तरतीब बताई जाती है। इसके ज़रिए इसम के आखिरी हर्फ की हरकत मालूम होती है। This determines exact movement of the last letter in the noun. Now you will understand it later when we talk about movement. और मिसाल से समझते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, कालाम, कालामुन, कालामन, कालामिन। सो इन तीनों में जो है मुख्तलिफ हरकत का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा अल-कालाम, अल-कालामा, अल-कालाम, अल-कालामा
अलकाला में कालामुन, कालामन, कालामिन ये आम के लिए इस्तेमाल होता है और अलिफ लाम अगर आ जाए तो ये ख़ास के लिए इस्तेमाल होता है। If it is like this, kalamun, kalaman, kalamin, it's common noun, and if alif lam come in the beginning, it's proper noun. Common noun will never end in ing form. This is common noun al-kalamu, al-kalama. Sorry, this is proper noun al-kalama, al-kalamu, al-kalame. Now talk about alphabets. हरूफ तजही अरबी ज़बान में कुल 28 हरूफ हैं और एक हरफ अलिफ है। There are total 28 letters in Arabic and one letter is extra letter or helper which is alif. So here are 28 letters. We will go through one by one. This letter is called hamzatun. Hamzatun. Za'un. Fa'un. Sin. Ba'un. Kafun. Ta'un. Shin. Sa'un. Swadun. Zwadun. Lamun. Jimun. मीमुन। इसको दो तरह से लिखा जाता है, इस तरह भी और इस तरह भी। There are two ways to write this letter. हाउन, त्वाउन, खाउन, ज़्वाउन, हाउन, काफुन, दालुन, आइनुन, गाइनुन, वाउन, ज़ालुन, याउन, राउन, नूनुन। और ये 28 हरफ पूरे हो गए हैं। This completes 28 letters. One extra letter is alifun. This and the first letter we talk, hamza. This almost sounds the same and can be replaceable. Mostly it come in place of this letter and replace it. ज़्यादातर अलिफ मदद करता है दूसरे लफ्ज़ों की और हमज़ा की जगह आता है। इसको गिनती में शुमार नहीं करते, लेकिन कुछ इसको
मदद के लिए इजाफी हरफ कहा जाता है। हमजा के बारे में एक और चीज़ है कि अगर हमजा किसी लफ्ज़ हरफ के ऊपर आए तो वो ज़बर का आवाज़ देता है, और अगर किसी लफ्ज़ के नीचे आए तो वो ज़ेर की आवाज़ निकालता है। ठीक है, ज़बर, ज़ेर और पेश ये हरकतें हैं अरबी को सीखने के लिए, अरबी को बोलने के लिए। आगे चल के इनके बारे में भी बात करेंगे। इफ़ हमज़ातुन, दिस लेटर before appears this movement, upper movement. If this letter hamzatun if this letter appears like on top of letter, if this letter appears before this movement zabar, it sounds like alif, alifun, and above zabar, so a. And if this letter appear before this movement pesh, it sound like wow, this letter wow on. And if this appears before this movement zer, it sound like ye, this letter ya on. This is the same thing. Alif is not alphabet, it has no sound. It comes with the sound of its previous letter, or the sound of hamzatun. Okay, अलिफ का अलिफ कोई हरफ नहीं है, इसका अपना कोई क्योंकि आवाज़ नहीं होती, ये अपने से पिछले वाले हरफ की आवाज़ बोलता है या हमज़ा की आवाज़ बोलता है, तो इसलिए इसको हरफ में नहीं गिनते। आगे चलते हैं। आगे हरूफ की इक़साम, you can say types of letters. So there are 5 ways to classify. सेहत के एतबार से हरूफ की इक़साम, और you can say types of letter with respect with respect to health. So there are 14 types. Haruf illat, vowels of Arabic. वाव और ये हरूफ इल्लत हैं, ये दो हरफ हरूफ इल्लत हैं, जबकि अलिफ इनके मावून में आता है। टोटल वाव, ये और अलिफ ये हरूफ इल्लत में आते हैं,
ये दो तो हरफ हैं, ये अलिफ अमूमन मदद के लिए मावन में आता है। These two letters, Wa'un, Ya'un, are the vowels of Arabic. However, this letter, Alifun, comes to aid them. So there are three in total. Other type is Haruf Sahi, consonants. हरूफ इल्लत के अलावा तमाम हरूफ सही हैं. All other letters except vowels are consonants. Another type is ta'lil, the removal. So किसी फ़ेल में एक हरफ इल्लत को दूसरे हरफ इल्लत से तब्दील करने या मुकम्मल हज़फ करने को कहते हैं. हज़फ मतलब मुकम्मल उसका ख़त्म करना. The changing of one vowel letter with another or removal of a vowel letter from verb is the removal or ta'lil. So when we discuss it further, you will understand. Next, next is again हरूफ की इक़साम और टाइप्स ऑफ लेटर. दिस टाइम इमला के एतबार से और विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग. सो देयर आर टू टाइप्स, डिस्टेंट और कनेक्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हरूफ मुनफसला, the distant one or disconnecting one. Hamza, Dal, Zal, Re, Ze, Waw. These letters, ये 6 हरूफ मुनफसला हैं जो अक्सर अपने से पिछले हरफ के साथ मिलकर लिखे जाते हैं. या दरमियान में मिलकर आते हैं. These 6 letters, Ain, Dal, Zal, Re, Ze, Waw. The 6 letters often come attached to the letter before them or in the middle to be attached. ये हरफ ज़्यादातर जब भी आएंगे तो अपने से पिछले लफ्ज़ के साथ मिलकर आएंगे. इन लफ्ज़ के बाद कोई भी आएगा तो वो अलग ही लिखा जाएगा, यानी उसमें फासला होगा. मिसाल से समझते हैं. अभी दोनों की मिसाल देते हैं. इबादुन, सबरुन. तो ये यहाँ पे रे अपने से पिछले वाले लफ्ज़ के साथ मिल के आया है. Now let's see the example. Ibadun, sabarun. So here this letter is joined before the previous letters. Here is, you can understand, if these letters are not at start, they don't attach to the letters after them. Okay, so
only if these letters come in the middle or after they can be attached. If it starts with the word start with this letter, they don't attached. Next, हरूफ मुतसिला। ये हरूफ किसी लफ्ज़, इसम या फ़ेल में अपने से पहले और बाद में आने वाले हरफ के साथ मिलकर आते हैं। मुतसिला, it's attached, meaning is attached. So this letter often come attached to the one before and after them. Let's see. This kataba, ghafala, mana'a, talaba. You see these letters come attached, and these letters in her the except these 6 letters, all others are these letters harufe muttasila or attached one. So these are 6, these are 22. Okay. Now coming to the next one, अगले एग्जाम के मुद्दे पर जाते हैं आवाज़ के एतबार से। सो हरूफ की इकसाम आवाज़ के एतबार से। The type of letter with respect to sound. So there are 2 types. हरूफ शमसिया, हरूफ कमरिया. Now let's say what are these. ये कुल 14 हरूफ है। अगर इनके शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो लाम की आवाज़ पहले हरफ से बदल जाती है। So these are total 14 letters. If alif lam, these 2 letters come at the beginning, the lam letter, its sound changes with the first letter of the word. Let's see with an example. Here is an example. Ash-shamsu. So the sound is like, the letters are like al shamsu, but when it come together it sounds like ash shamsu. Ash shamsu. It written as al shamsu but sounds like ash shamsu. So these are 14 letters. ये 14 हरूफ हैं और जो भी लफ्ज़ इनसे शुरू होगा, अगर इनके शुरू में अलिफ या लाम आ जाए, अलिफ लाम आए तो इनकी आवाज़, लाम की आवाज़ उस लफ्ज़ के पहले हरफ से बदल जाएगी। जैसे अल शम्सो, इसका साउंड, इसकी आवाज़ अश-शम्सो ये आएगी। ठीक। अश-शम्सो, अस-सलातो, अत-तारिको, अर-रहमान। हरूफ़े कमरिया। नेक्स्ट टाइप इज़ हरूफ़े कमरिया। ये वो हरूफ हैं जिन इनके शुरू में अलिफ लाम लगाया जाए तो लाम की आवाज़ पढ़ी जाती है। ये कुल 14 हैं। These are the letters, in if the word starts with them and alif lam comes before them, like the one we talked above. If the words starting with this letter alif lam comes before them, it sounds as alif lam as it is.
So here is an example. Maslan, al-kamaru, al-kamaru, same sound. बाकी मिसालें, other examples, al-jabbaro, al-ghaffaro, al-musawwiro, al-bariyo. हरूफ शमसिया, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, लाम, नून. These are 14 हरूफ शमसिया. हरूफ कमरिया, हमज़ा, बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, हे, छोटी है. These are 14 हरूफ कमरिया. ये 14 हरूफ शमसिया हैं और ये 14 हरूफ कमरिया हैं. जिनके नीचे ज़ेर है वो मोनस हैं, बाकी मुज़क्कर हैं. The letters that are underlined, these letters are considered feminine in their own, and the others are considered masculine letters. This letter वाव is considered both masculine and feminine. वाव मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में गिना जाता है. अगली इक़साम की किस्म हरकत के एतबार से इक़साम. The types of letters with respect to movement. हरकत, you can say movements. किसी भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ के हरकत में होने से लफ्ज़ मुतहर्रिक होता है. If last letter of a word is in movement, then the word is in movement. So let's see how it works. हरकत की इक़साम, 3 छोटी हरकतें. ज़बर, you can फतहातुन ज़बर, ज़ेर कसरातुन, दिस ये हरकत कसरातुन कहते हैं इसे. पेश ज़म्मातुन, ये हरकत. 3 types of small movements, ज़बर, फतहातुन, ज़ेर, कसरातुन, पेश, ज़म्मातुन. These are, as you see in the brackets, these are the 3 movements. 3 बड़ी हरकत, 3 big movements you can say. अलिफ, अलिफुन, याउन और वाउन. These 3 letters, these are called हरूफ मुद्दतुन. Let's proceed further. Letter with movement. मफ्तूहुन, जिस पर ज़बर हो. The letter with this movement फतहातुन. मकसूरुन, जिस पर ज़ेर हो, और the letter with this movement कसरातुन, this movement. मज़मूमुन, जिस पर पेश हो या ज़म्मातुन हो. The letter with this movement, you see this movement. Another you can say opposite of movement is this sakin, majzoom, you can say without movement.
जिस हरफ पर सुकून या जज़म आ जाए उसे उस लफ्ज़ को मजज़ूम या साकिन कहते हैं। If a letter has this symbol or jazm, it's called sakin or without movement. Let's see example. This is an example. Arab. Arab in English you can say. So this letter B has this movement, you say sakin or without movement. It doesn't sound Araba or Arabe, it just stop there. Arab. Mushaddadun or double letter. Let's say what's this. किसी लफ्ज़ पर कोई हरफ दो बार आ जाए और पहला साकिन हो बाद वाला मुतहर्रिक हो ऐसे हरूफ को मुशद्ददुन कहते हैं। If a letter on a word appear twice, first without movement sakin, then with a movement, this plus this, sakin plus zabar, zer plus pesh, mutaharrik both with movement, one without movement, one with movement. Here are some examples. Jajjun, or this becomes Jajjun. You see these two letters merge and this final form come Jajjun. Now this letter Hakkun, okay, and this become Hakkun. Jajjun becomes Jajjun. This letter Hakkun, this become Hakkun. मुतहर्रिक को भी मिला सकते हैं और मुतहर्रिक और साकिन को भी मिला सकते हैं, मीनिंग the two letters with movement can be brought together, or one letter with movement and one without movement can be brought together. Another type is munawwanun. It is called modulated letter or double movement. जिस लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर तनवीन आ जाए, दो ज़बर, दो पेश या दो ज़ेर, जिस हरफ के आखिर में तनवीन आ जाए तो ये आखिर में नून साकिन की आवाज़ देता है। The letter in the end with double movement sound, it sound like this letter noon without movement or sakin. So let's see. Maslan, for example, this word Taliban, Taliban, Talibin, Talibin. You see, this noon sound comes in the end. नून की आवाज़ आती है आखिर में। ओके, तो अभी तक हमने हरफ की इकसाम पढ़ी, मुख्तलिफ इकसाम
हरकत के एतबार से, आवाज़ के एतबार से और उसके आवाज़ इमला के एतबार से, उसकी सेहत के एतबार से। We discussed types of letters with respect to sound, with respect to pronunciation, with respect to its health, with respect to you say dictation, with respect to writing or dictation, and we discuss at the beginning some important terms. शुरू में हमने कुछ इस्तिलाहात भी पढ़ी, जैसे इल्म नजव, इल्म सर्फ। तो आज के लिए इतना ही। अभी जितना हमने पढ़ा है उसका एक टेस्ट है। दिस इज़ द टेस्ट सो फार व्हाट वी रेड। इसका जवाब मैं अगले लेसन में इस टेस्ट का मैं जवाब दूंगा कि इसको कैसे हल करना है। फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये है कि आप इसको हल करें। सो दीज आर द क्वेश्चंस of what we read up till now. Study it and try to answer them. I will give the answer of these questions in the next lesson. So तमाम हरूफ तजही लिखें और इनसे मुंसलिक इक़साम वाज़े करें. Write all alphabets and label them with respective types they are associated. सवाल 2. हरूफ की इक़साम को चार्ट और शाख के ज़रिए वाज़े करें. Next question is draw a chart or block diagram with branches showing all types of letters. Okay, तो मिलते हैं अगले लेसन में.